if two or more, ठीक है, hand speed रखिबो complete करनो बा पहले. If two or more singular nouns, if two or more singular nouns are joined by and the verb used will be plural. The verb used will be plural. Repeat, students, try to check. If two or more singular nouns are joined by and, the verb used will be plural. Example, Ram and Mohan. Ram and Mohan are friends. Ram and Mohan are friends. R tole underline kar. Yes. Rule number 2. R. एटा verb subject सहित verb agree करूची. Rule लिखि साला पर बुझिए दे. Rule number 2. If two singular nouns joined by and point out to the same thing, or person, the verb must be singular. I want to repeat, students. If two singular nouns joined by and point out to the same thing or person, the verb must be singular. Example, the collector and district magistrates. The collector and district magistrate is away. The collector and district magistrate is away. The collector and district magistrate is away. Underline करो is तले. देखो पिले, the collector and district magistrate तमने ये collector से ही district magistrate. हमें जितने कोई जानते the collector and the district magistrate एटी कौन ही तंदा आर है. तो underline करो verb रोला हमारा is तले underline करो. The rule number 3. In case two subjects are joined by as well as, in case two subjects are joined by as well as, the verb agrees with the first subject. The verb agrees with the first subject. First subject. Example. Lekha Kanta, Kanta, Kanta as well as her children.
Kanta as well as her children is playing. Kanta as well as her children is playing. Is playing. Kanta as well as her friends, sorry, her children is playing. Listen, students. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନସିଡର କରିଛେ ସବଜେକ୍ଟ verb agreement. What is the meaning of a subject? Subject means about whom something is said. About whom something is said, that is subject. गोटे subject टा कौन हेई परिबो? Noun हेई परिबो, pronoun हेई परिबो, noun phrase हेई परिबो. तेणु जेतेबेले आमे कहिबा गोटे सब्जेक्ट रे दीटा सब्जेक्ट को आमे कोन गोटे सब्जेक्ट रो वर्तमान वर्ब सहित हमर कोन एग्रीमेंट आमे जानिबा दरकार. तापर दीटा सब्जेक्ट रो वर्ब सहित केमिति रिलेशनशिप रहउची सेटा मध्ये जानिबा दरकार. आमे कहिले कांता as well as. कांता रहला हमर सिंगुलर, as well as कोन कला कोई जॉइनिंग कला. It acts as a conjunction. What is the meaning of a conjunction? A word which joins words or sentences. जे गोटे वर्ड को जॉइन करे किंबा सेंटेंसेस मान को जॉइन करे ताको हमें कंजक्शन बोली कहि थाउ. ताले एटी देखो कांता as well as her children. एटी दीटा सब्जेक्ट रहिला. गोटे सब्जेक्ट हैला कांता आ गोटे सब्जेक्ट हैला कोन her children. तनु फर्स्ट सब्जेक्ट किए कांता. कांता पकरे सिंगुलर लागिबो ना प्लुरल लागिबो? सिंगुलर. तनु आंसर लेखो कांता as well as her children is playing. जदि एटी and थागा ताले आंसर की वेयर. नेक्स्ट रूल लेखो neither comma either comma every comma each everyone comma many a followed by a singular verb. Followed by a singular verb. Take a peek. Example. Either of these plans. Example. Either of these plans. Example. Either of these plans. Either of these plans is to be adopted. Either of these plans is to be adopted. Either of these plans is to be adopted. Actually, students, two plans given here. तम घर लोक तुमको ऑप्शन देले दीटा तुम पई रहला प्लान आइदर टू रीड साइंस और कॉमर्स. एट ए टाइम कोन तुम साइंस कॉमर्स पढिबो कि? आइदर पढिबो साइंस और पढिबो कॉमर्स. तेणु जोटी आइदर और थिबो दीटा ऑप्शन भितर हम गोटे ऑप्शन को चूज करिबा. तार नेगेटिव कोन? नाइदर न. तेणु पिले एडी देखिनिया हमर आइदर ऑफ दिस प्लान्स दीटा प्लान हम पाखे अछि. गोटे प्लान को हम सिलेक्शन करिबा. So either of these plans is to be adopted. ए दुईटी प्लान भितरु कोनसी गोटे प्लान को हमें अडॉप्ट करिबा, प्रणयन करिबा. सेति पेट रगिला सिंगुलर वर्ब. जोटा जार किछि डाउट रहिछि यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स रिपीटेडली पचारि पर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स रूल नंबर लिखिनियो. कितना नंबर रूल है? 5. If two subjects are joined by either or comma neither nor, the verb agrees with the subject. The verb agrees with the subject near to it.
देख पिले रूल हमु कौन कहले if two subjects are joined by either or neither nor the verb agrees with the subject near to it. Example, neither he neither he nor they are prepared to do this. Neither he nor they are prepared to do this. सुबुच last line की neither he nor they are prepared to do this. देख पिले जिते बड़े आमे दुई दुईटा सेंटेंस को जॉइन करिबा आइदर और किबा नाइदर द्वारा हमर दुईटा सब्जेक्ट सियोर आसीबे एवं जो सब्जेक्ट नियरेस्ट थिबा वर्ब पाखा पेकी एठी मु कहबी नाइदर ही नॉर दे एठी नियरेस्ट कोटा रहिला दे वर्ब पाखा पेकी को सब्जेक्ट आसी दे आसुची तणु करी दे पाखरे इज बसिबो ना आर बसिबो आर neither he nor they are prepared to do this. आर तले अंडरलाइन कर दियो. नेक्स्ट स्टूडेंट रूल नंबर 6. A noun in singular form. A noun in singular form. A noun in singular form and a collective in sense takes a singular verb. Takes a singular verb. A noun in singular form and a collective in sense takes a singular verb. Like a parliament. Parliament has elected. Parliament has elected its members. Parliament has elected its members. It is singular sense रे हमें यूज कले एवं पार्लियामेंट होची गोटे कलेक्टिव नाउन तमे ऑलरेडी पढिचो पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तेणु एठी किंतु पार्लियामेंट को आमे कोन कलु ना पर्टिकुलरली एठी कलेक्टिव नाउन सेंस रे जतबे यूज कलु कलेक्टिव नाउन रो गोटे गोटे एग्जांपल को क्लास आर्मी ये गोटे कलेक्टिव नाउन नहीं ग्रुप टीम पार्लियामेंट हैला एगुडा सब कलेक्टिव नाउन एठी यूज करा गला हमर कोन सिंगुलर वर्ब. रूल नंबर 7. ये great many is followed by a great many is always followed by a plural noun and a plural verb. A great many is always followed by a plural noun and a plural verb. Example, a great many students a great many students have been declared successful.
A great many students have been declared successful. देखो पिला जोटी थी many a सेटी यूज होबो सिंगुलर ये many a great many जगह रे verb होबो कोन ना प्लूरल एगुडा के ट्रिकी रूल गुडा को पढ़ी देला पर एक्सरसाइज पढ़िबो तापरे मु व्हाट्सएप रे सेंड करने भी चारि चारटा असाइनमेंट एक्सरसाइज घरे रिपीटेडली प्रैक्टिस करिबो जोटा डाउट रहला मते पछरे और रूल नंबर 7 पर लिखा रूल नंबर 8 if two subjects are joined by with together with no less than in addition to together with comma no less than comma in addition to the verb agrees with the first subject example the officer together with his subordinates was present in the function देखो पिले the officer together with his subordinates एटी इंपोर्टेंस कहां पर दिया हला ऑफिसर को ऊपर ना सबऑर्डिनेट्स को ऊपर ऑफिसर को ऊपर तने विथ हला कोई जॉइनिंग तने सिंगुलर वर्ब यूज करा गला द ऑफिसर टुगेदर विथ हिज सबऑर्डिनेट्स वाज प्रेजेंट ऑन रूल नंबर 9 देखो if two or more singular subjects if two or more singular subjects preceded by preceded by each or every and connected by and the verb is usually singular the verb is usually singular example each boy and each girl was dressed with a new dress each boy and each girl was dressed with a new dress प्रत्येक जने जने गोटे गोटे नुआ ड्रेस पिंदी थिले जने जने गोटे गोटे ड्रेस पिंदिले एटा सिंगुलर नेक्स्ट स्टूडेंट्स रूल नंबर 10 two or more singular subjects Ashish
two or more singular subjects connected by or comma nor or comma nor comma neither nor take a verb in the singular. Take a verb in the singular. How to repeat Kauchi? Two or more singular subjects connected by or nor neither nor take a verb in the singular. Example, the boy or the girl the boy or the girl is fond of sweets. The boy or the girl is fond of sweets. Is fond of sweets. Out example दियो. Either Amal, AMOL, either Amal or Bimal has eaten the mango. Has eaten the mango. Either Amal or Bimal has eaten the mango. Next one, rule number 11. देखो, rule number 11. When the subject joined by all देखो, when the subject joined by all, comma nor, comma either or, neither, comma nor, comma either, comma or what लिखना are of different numbers, the plural subjects comes later. The plural subject comes later. And the verb must be plural. And the verb must be plural. The verb must be plural. Example, Nikhil or his friends have done this work. Nikhil or his friends have done this work. Nikhil or his friends have done this work. देखो पिले जितेबेले आमे कोजॉइनिंग करूचे गोटे सिंगुलर सब्जेक्ट सहित आ गोटे प्लूरल सब्जेक्ट बर्तन आमे एठी कोन कहले निखिल और हिज फ्रेंड्स यदि मु कहबी हिज फ्रेंड्स एंड निखिल एटा अनसिस्टमैटिक हे जिवो प्रोनाउन चैप्टर रे स्पेशली रूल रहिछि 2 3 1 हमर पर्सन होछि तीन प्रकार फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है ना फर्स्ट पर्सन हला आई ता प्लूरल हला वी सेकंड पर्सन हला यू ता प्लूरल हला यू
थर्ड पर्सन किए हेले ही सी इट ता प्लूरल हला दे तेणु मन रख रूल रहउची यू ही एंड आई ता माने जेते बेला में सेंटेंस लिखिबा प्रोनाउन चैप्टर रे अछि सेकंड पर्सन फर्स्ट रहइबो तापरे थर्ड पर्सन तापरे हला फर्स्ट पर्सन तेणु एठी मन रख जेते बेले दीटा सब्जेक्ट रहिबे हमर प्लूरल जो सब्जेक्ट थिबो सेटा साधारणतः लैटर स्टेज रे लिखा जाय एठी देखो निखिल और हिज फ्रेंड्स एठी प्लूरल कोठा हला हिज फ्रेंड्स एटा सेकंड पार्ट रहला नाही सब अरे ऑलमोस्ट ऑल सुन बुझो ना नहीं आरएच कर क्वेश्चन जेते दर पचारिबो डिस्कशन करबा तापर जो नेक्स्ट क्लास रहइबो क्वेश्चन आंसर पैटर्न रहइबो डिबेटिंग पैटर्न रहइबो तमे बुझेइबो मु बुझेइबी डिस्कशन करबा जने कांसेप्ट क्लियर होई के जीवो हला विषय चल देखो एग्जांपल हमर कोन थिला आइदर हमर एटा देखले निखिल और हिज फ्रेंड्स हैव डन दिस वर्क रूल नंबर 12 लेख अब दीटा रूल रहउची when the subject is joined by either or comma neither nor are of different persons the verb agrees in person with the nearest to it agrees in person with the nearest to it example lekha either he or I have done this work either he or I have done this work ताले पिले देखिनियो ही हला हमरो फर्स्ट सब्जेक्ट आई हला सेकंड सब्जेक्ट आई पाखरे बसिला हाफ ठीक अछि ना नहीं जेते हमें हाज वर्तन देथबा एटा अब करेक्ट एरर चैप्टर रे जो मिस्टेकन थिबा हम एक्सचेंज करिबा हाफ बदल रे यदि ही थांता हाज आई अछि हाफ यू थिले हाफ रूल नंबर 13 when subject differing in a number ए रूल टा इंपोर्टेंट प्लस 2 पर जेते एंट्रेंस एग्जाम दबो तमे माने सब में कम ए रूल बेसिस रे when subject differing in a number or person are connected by one and the verb must be plural example you he and I are friends it plural है ना नहीं you रहला he रहला and I रहला टोटली क्वांटम रहला plural supplementation करे last rule number 14 let's a collective noun takes a singular verb A collective noun takes a singular verb when it is taught, T-A-U-G-S-T, taught, when it is taught of as a whole,
when the individuals when the individuals takes a plural verb, when the individuals takes a plural verb, then the individuals are separated. Then the individuals are separately thought of. Then the individuals are separately thought of. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ collective noun definition well known, noun definition mona ଅଛି ନା ନାହିଁ? Any naming word is called a noun. What is the definition of noun? Any naming word is called a noun. The noun of a person, place, thing, animal. तार गोटे कौन आमे ताको noun बोले consider करिबा. ताल पिले हमको first rule कौन कहले? A collective noun takes a singular verb when it is thought of as a whole. जेतबे totally आमे ताको एक बोले consider करिबा. The army. Singular. कितु पिले आमे कहबा the jury. Singular है परिबो, plural है परिबो. जुरी रो ओडिया होची विचारक मंडली. जेतबे विचारक कौन सी डिसीजन नेबे गोटिए डिसीजन में पहुंचबे. गोटिए डिसीजन में पहुंचबे. सेतेबेले आमे ताको कहबा कोन ना सिंगुलर. जेतेबेले तांको भितर डिवाइड ही जिवे ताको आमे कोन कहबा प्लुरल. अर्थ बुझो तन गोटे एग्जांपल ले. The jury has ordered to hang the man. The jury has ordered ORDERED. The jury has ordered to hang the man. फांसी देवा ପାଇଁ ସମସ୍ତେ डिसीजन नै गले. एटा अनोनिमस डिसीजन, सर्वसम्मति क्रमे डिसीजन निया गला. All are one to view one decision. Okay, Siddhant? I would example lekha. The jury are divided. The jury are divided. The jury are divided in their opinion. The jury are divided in their opinion. जेतेबेले डिसीजन टा गोटे व्यू हबनी, गोटे प्रकार डिसीजन आसीबनी, सेतेबेले आमे ताको डिवाइडेड डिसीजन कहबा, सेतेबेले प्लुरल हबो. आ जेतेबेले सिंगल डिसीजन आसीबो ताको आमे कहबा कोन सिंगुलर. एति कि थिला तुमर रूल रिलेटिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. केते टाइम है 20 मिनिट्स. तुबो कहली 15 minutes अच्छी तुमको 5 minutes दिया हला ए रूल गुडा गो थ्रू द रूल्स. रूल गुडा गलो यार के डाउट पछेलो आ जदी कांसेप्ट क्लियर हे गेला कि असुविधा. Hey, I'm going to go class today. You are under CCTV surveillance. Officer is going to be don't doubt.